Yes, we are here with the second part of the second chapter, biological classification, and the topic is five kingdom system of classification. Who gave this five kingdom system of classification? It was given by R.H. Whitaker. In the previous part, we studied about till the four kingdom system, and the fifth kingdom, that was fungi, was given by R.H. Whitaker. So in that way ये फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एग्जिस्टेंस में आया, क्योंकि पहले से चार आ चुके थे. दो सीक्वेंसेस डिफरेंट, सीक्वेंस तो ऑफ कोर्स वो प्रिमिटिव से एडवांस की तरफ जाएगा, है ना. सो R.H. Whitaker gave five kingdom system classification. The first kingdom he kept Monera, then the second Protista, then the third fungi, fourth is Plantae, and the fifth is Animalia. So क्या basis था इस five kingdom system of classification के? So these are the basis on which the five kingdoms system of classification came into existence. Number one, cell structure. Whether the organism is prokaryote or eukaryote, cell का structure कैसा, उसका nucleus कैसा है, primitive nucleus or advanced. If it is primitive, then comes under prokaryote, and if it is advanced, then comes under eukaryote. तो उन्होंने simply Plantae Animalia में नहीं डाला, जितने भी prokaryotes थे उन्हें अलग एक separate kingdom में डाल दिया, that is Monera. So all the prokaryote, that means the unicellular organism which are having primitive nucleus is not surrounded by membrane, he kept under Monera. तो सारे के सारे बैक्टीरिया किसके अंदर आ गए? Monera के अंदर. All the bacteria he kept under kingdom Monera. Bacteria, blue green algae, all these he kept under kingdom Monera. Then next one, body organization. Body organization कैसी है? Unicellular or multicellular? If it is unicellular, then or multicellular. If it is unicellular, as we know, तो सारे ऑर्गेनिज्म प्रो या यू है. अब प्रो सारे के सारे यूनिसेल्युलर है, वी नो. But other than prokaryote, there are few more organisms which are eukaryote, which are unicellular, जिसे उन्होंने प्लांटी के अंदर रख दिया था. सारे यूनी मल्टी ऑल द प्लांट्स उन्होंने प्लांटी के अंदर रख दिया था. तो यूनिसेल्युलर कुछ ऑर्गेनिज्म which are you can say characteristic similar to Animalia, or few planty characteristic also, he kept under Protista. मतलब वैसे organism which are unicellular but not prokaryote, he kept under Protista, and basically those are eukaryote. तो कौन कौन से ऐसे थे? Protista के अंदर क्या क्या उन्होंने रखा? सारे unicellular algae को, all the unicellular algae. कौन से algae? जो unicellular थे उन्होंने Protista में रख दिया, along with amoeba, paramecium, because all these are unicellular and eukaryote. Eukaryote means well defined nucleus present है, but ये क्या है? unicellular है. तो इन्हें उन्होंने इससे रख दिया Protista के अंदर. Earlier all the algae were under kingdom Plantae, चाहे वो unicellular algae हो या multi, सबको उन्होंने Plantae के अंदर रखा था. But now after this kingdom system of classification, all the unicellular organism he kept under, जो unicellular थे वो सारा Protista में रख दिया. कौन से algae? like Chlamydomonas, that is unicellular. Few more algae unicellular उन्होंने Protista में रख दिया. Amoeba, paramecium, ये सारा रख दिया उन्होंने Protista में. यूग्लिना ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर वी डिस्कस की वो फोटोसिंथेसिस कर सकता बट सेल वॉल नहीं, उसे रख दिया उन्होंने Protista के अंदर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन. whether organism can prepare its food, so autotrophic, or can't prepare its food, that means heterotrophic. So earlier we studied कि सारे ही सेल वॉल वाले Plantae में आ गए. तो फंगी वर ऑल्सो हैविंग सेल वॉल, उसे भी Plantae में रख दिया गया था. बट
अब क्या कैटेगराइज किया कि क्या वो ऑटोट्रॉफिक है. सो वी नो दैट फंगी इज प्योर एक्सक्लूसिवली हेटरोट्रॉफिक, इट कांट डू फोटोसिंथेसिस. तो जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते थे, दो सेल वॉल वाज फाउंड बट ही केप्ट इट अंडर किंगडम फंगी. सो किंगडम फंगी गिवन बाय R.H. Whittaker on the basis of mode of nutrition, that is it can't do photosynthesis, autotrophic nutrition नहीं है. And one more thing, cell wall is not cellulose. सेल्यूलोज का सेल वॉल नहीं था. किसका सेल वॉल बना हुआ था? काइटिन का. The cell wall of fungi is not made up of cellulose but it is made up of chitin. So इसे रख दिया फंगी के अंदर. मतलब all the heterotrophic and chitinous cell wall organism are fungi. And again unicellular and multicellular. So unicellular he kept under Protista and multicellular he kept under kingdom fungi. Now next is mode of reproduction. Reproduction कैसा है? Asexual है, sexual है. Mostly primitive organism में asexual है और जितने हम advance की तरफ जाते हैं sexual reproduction है इसमें. Then the most important is phylogenetic relationship. Phylogenetic relationship. Phylogenetic relationship क्या है? This is evolutionary relationship. How organisms are closely related to each other. एक दूसरे से closely related कैसे है? That is phylogenetic relationship. This is most important. Because अगर हमने सभी को plant में रख दिया या animal में, that is not as it is. Primitive से advance की तरफ अगर जाएंगे तो life की existence शुरुआत किससे हुई थी? Unicellular. Then multicellular came into existence. That means unicellular are more related to each other with comparison to the multicellular. Advanced organisms are more related to each other. So that is also very important for this system of classification. So this is how the five kingdom system of classification came into existence.